Today I am making video on the divisibility rules from 1 to 11, from 2 to 11 because 1 divides all numbers. So we will first of all know about the divisibility of 2. If the last digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2. अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वंस डिजिट वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा. Now this is example. So here you can see I have written three numbers 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 6. So here in the first number 6 is the last digit, so it is divisible by 2. In the second number 9 is the last digit, so it is not divisible by 2. In the third number 1 is the last digit, so it is also not divisible by 2. Now this is the divisibility of 3. If the sum of the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3. कि अगर हम नंबर की डिजिट्स का प्लस करें और वो 3 से डिविजिबल आए तब वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है. नाउ दिस इज द एग्जांपल फॉर divisibility of 3, 4, 1, 3, 6. Now we will add all digits 4 plus 1 plus 3 plus 6. Now 4 plus 1 5, 5 or 3 8 or 8 or 6 14. Now 14 is not divisible by 3. So here you can see 14 is not divisible by 3. That's why 4136 is not divisible by 3. So in this way you can do check the divisibility of 3. Now divisibility of 4, if the last two digits of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. अगर लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर की वो 4 से कट हो रही हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. नाउ देयर आर टू numbers I have taken. In the first number last two digit is 46. In the second number last two digit is 16. You can see 46 is not divisible by 4. That's why it is not divisible by 4. In the second number 16 is divisible by 4. That's why the whole number is divisible by 4. Now this is the divisibility of 5. If the last digit of the number is 0 or 5 then the number is divisible by 5. अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 होगी तो नंबर जो होगा वो divisible by 5 होगा. Now these are the examples. I have written three numbers and first is the last digit is 0, that's why it is divisible. Second number last digit is 5, that's why it is divisible. And third number last digit is 3, so it is not divisible. Now the divisibility of 6. If the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. अगर कोई नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो 6 से डिविजिबल होगा. Now example is I have written a number. Now we will check the divisibility by 2 first. Now last digit of this is 0, that's why it is divisible by 2. Now for 3 we will add all the digits 2 plus 1 plus 6 plus 0. Answer is 9. Yes, it is also divisible by 3. अब अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा. सो बाय 6 इट इज ऑल्सो डिविजिबल. नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर देन डबल इट and subtract the result from the remaining number. If it is divisible by 7 then the number is divisible by 7. मीन्स सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट को लेना है, उसका डबल करना है और जो आंसर आएगा उसको बचे हुए डिजिट से माइनस करना है. अगर वो 7 से डिविजिबल होगा देन इट इज़ डिविजिबल बाय 7.
Now this is example. I have taken a number 2197. Now first of all, the last digit is, here you can see the last digit is 7. अब 7 का हम करेंगे डबल, और बची हुई डिजिट क्या है 219। तो सबसे पहले हम 7 का डबल करेंगे और उसे 219 से माइनस करेंगे। तो 219 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 जा होता है 14। When we subtract, we will get 205. Now again we will take 205 and subtract the double of 5, means 2 multiply 5. So 20 minus 10, this is 10. Now here you can see 10 is not divisible by 7, that's why the whole number 2197 is not divisible by 7. Now this is the divisibility of 8. If the last three digits of the number is divisible by 8, then the number is divisible by 8. अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं वो किसी भी नंबर की अगर डिविजिबल है 8 से, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नाउ दिस इज द एग्जांपल 43840। नाउ हेयर 3 डिजिट्स आर 840। अब हम इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। सो 8 1 जा 8 और 8 0 I have taken, so 40. Now 8 5 is 40. Now here you can see it is exactly divisible by 40. That's why yes, it is divisible. Now this is the divisibility of 9. If the sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. ये 3 और 9 की divisibility जो होती है वो सेम होती है, बस उसमें 3 से divisible होना चाहिए, इसमें 9 से divisible होना चाहिए। So we will find out the sum of digits and then we will find is it divisible by 9 or not. Now this is the example 4136845. Now find the sum of digits 4 plus 1 plus 3 plus 6 plus 8 plus 4 plus 5. Now add 4 plus 1 5, 5 and 3 8, 8 and 6 14, 14 or 8 22, 22 4 26 and 31. 31 is not divisible by 9, that's why the whole number is not divisible by 9. Now the divisibility of 10. If the last digit of the number is 0, then the number is divisible by 10. अगर लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो किसी भी नंबर की, तब जो होता है वो 10 से divisible होता है. Now there I have written two numbers. Now mark their last digits. Here it is 0. So it is yes divisible by 10. It is 8. No, it is not divisible by 10. Now this is divisibility of 11. If the difference between the sum of digits at even place or at odd places is divisible by 11, then the number is divisible by 11. अगर जो नंबर इवन प्लेसेस पे दिए हैं उनका सम और जो ऑड प्लेसेस पे दिए हैं उनका सम निकाल के अगर हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो वो डिफरेंस अगर 0 आए या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आए, जैसे 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा. Now there is one example for solving the divisibility of 11. Now this is the example I have taken. So mark the digits from right side once. This is odd, even, odd, even, odd, even, odd, even. Now add all even digits and odd digits. Now first of all, sum of digits
at odd places. 8, 2, 8, 4. 8 and 2, 10, 18, 32. Now sum of even places. These are 3, 9, 5 and 3. So 3 plus 9, 12, 12 plus 5, 17 and 3, 20. Now difference is 22 minus 20, that is 2. Now it is not 0 or divisible by 11, so we will write no, the number is not divisible by 11, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 है, 0 भी नहीं है ना, तो 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, नो।